So good morning students. In the last video we were reading about the lesson 2 of geography class 7, the interior of the earth. So we have discussed about the interior of the earth. Our earth is made up of three main layers: the crust, mantle and the core. Today we will read, I will explain you the next topic, rocks and minerals. Page number 11, rocks and minerals. So what are rocks? Rocks क्या है? What are rocks? Rocks are the outermost layer of the earth made up of solid material. So rocks are the outer layer of the earth which is made up of solid materials, which when break due to the process of weathering and later it become soil. And the types of rocks. How many types of rocks are there? Rocks are of three types: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rocks. So rocks are of three types. Number one is igneous rocks. So what is igneous rocks and how these igneous rocks are formed? In page number 13, igneous rocks, the hot lava that flows out during volcanic eruptions cools down, solidifies over a period of time and forms igneous rocks. The word igneous is derived from the Latin word ignis, means fire. So what is the meaning of this word igneous? Igneous means what? Igneous. This igneous words, it came from Latin word ignis, I-G-N-I-S. So igneous is a Latin word which came from the word ignis. Which came from the word ignis, meaning ignis means fire, ag. Ignis means fire, ag. So how these igneous rocks are formed? Igneous rocks are formed when the hot lava, when volcano erupt and when lava comes up and when this lava cools down. जब लावा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है, when it cools down, then these igneous rocks are formed. Igneous rocks are also called primary rocks. Igneous rocks, it is also, its another name is primary rock. Primary rock. So this is about igneous rock, how igneous rocks are formed. Igneous rocks are formed when volcano erupts, when lava comes out and when it cools down, then it becomes an igneous rocks. Next, sedimentary rock. Sedimentary rocks. How these sedimentary rocks are formed? Sedimentary rocks are formed by the accumulation of sediment. Sedimentary rocks are formed by the accumulation of sediments. Accumulation of sediments. Sediments means like mud,
pebbles, sand. So these are all sediments. So when these sediments collect at one place, तो कैसे जमा होता है ये एक जगह में? By it is brought down by the force of water, stream or river. When stream or river with its flow bring mud, pebble and sand, जब इसको लेकर आता है नदी और जब ये एक जगह में जमा होता है और जमा होते 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 द डाउन पार्ट बिकम्स लेयर, ये परत बनते जाता है, लेयर बनते जाता है और कुछ सालों के बाद ये लेयर जो मड, पीबल और सैंड है ये तीनों हार्ड हो जाता है. इट बिकम्स ए सॉलिड एंड देन इट चेंजेस इनटू ए सेडिमेंटरी रॉक. सो समझ में आया हाउ सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड? सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स. जितना भी नदी पानी अपना फोर्स से मिट्टी, बालू, पत्थर को लेकर आता है और जब वो एक जगह पे जमा होते जाता है, जमा होते होते व्हेन इट बिकम्स लाइक ए हिल एंड द डाउन पार्ट एंड द लेयर पार्ट इट्स बिकम्स हार्ड. It becomes hard and after times passed, after years passed, it becomes like a rock. नीचे हार्ड होते जाता है. पत्थर, बालू, सैंड ये सब मिलकर नीचे प्रेशर से ऊपर बढ़ते जाएगा और नीचे प्रेशर पड़ते जाएगा. तो जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा ये इट बिकम्स लाइक ए रॉक, ये पत्थर की तरह बनते जाएगा और इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है. सो एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. Example of sedimentary rocks are sandstone. Sandstone is a type of sedimentary rock, एक टाइप का पत्थर है जिससे sandstone it is used in building of Red Fort. जो हम लोग के देश में लाल किला है वो इस पत्थर से sandstone से बना हुआ है और sandstone जो है वो sedimentary rocks है. So understood how is igneous rock formed? Sedimentary. Now metamorphic rock. So a metamorphic rock कैसे बनता है? How these metamorphic rocks are formed? So metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks undergo chemical changes under intense heat and pressure. ये metamorphic rock जो है ये इस दोनों rock से ही बनता है, sedimentary और igneous rock से ही ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. जब हीट और प्रेशर के कारण व्हेन हीट इंस्टेंस हीट एंड प्रेशर फॉल्स ऑन दिस टू टाइप्स ऑफ रॉक, दिस टू रॉक्स अगेन इट चेंजेस, ये बदल कर क्या बन जाता है? इट अगेन चेंजेस इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक्स. थोड़ा सा it changes into a metamorphic rock. Example of metamorphic rocks is marble. Marble is an example of metamorphic rock. So metamorphic rock is formed when igneous and sedimentary rocks changes under intense heat and pressure. बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जब इस दोनों रॉक्स पे पड़ता है तो ये दोनों रॉक भी फिर क्या होता है? इट चेंजेस इट्स शेप, ये बदल कर एक अलग टाइप का रॉक बनता है विच इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. क्या ठीक है?